your name? My name is Hiroaki Miyatake. Yeah, I Yeah. met him today. Yes. No number. I don't want number. This one. Okay. Which is a good tag. इसका ही होता है. So, देखिए जी भाई बड़ा कुछ है यार. बड़े मजे की. प्लेन जी फाइनली अब स्काई ट्री की तरफ हम पहुंच चुके हैं. कुछ एंट्रेंसेस की मेट्रो की तरफ से अंदर से हुई. लेट्स सी एक्सप्लोर इट फ्रॉम इनसाइड और फिर आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं. स्काई ट्री पे चल के व्यू करवाते हैं टोक्यो का. देखिए स्काई ट्री जाते जाते पूरे मॉल्स हैं इसके नीचे. डिफरेंट आउटलेट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं. बट फॉर स्काई ट्री स्टिल वी नीड टू गो अप. डिफरेंट तरह की आउटलेट्स हैं, डिफरेंट शॉप्स हैं. सोवेनियर्स हैं यहाँ पर. रेस्टोरेंट्स का कल्चर बहुत अच्छा है भाई यहाँ पर. जहाँ आप जाएं, जिस तरफ जाएं, रेस्टोरेंट्स के बगैर इनकी लाइफ, इनकी बात सब कुछ अधूरा है. और जापानीज़ कुजीन जैसे मैंने आपको बताया पूरी दुनिया में फेमस है अपने हेल्थी होने की वजह से, डाइवर्सिफाइड वैरायटी होने की वजह से. तो ये देखिए जी स्काई ट्री आपको दिखाते हैं जी. ये है जी टोक्यो स्काई ट्री. आई होप जो मैं चाह रहा हूँ टोक्यो को एक अच्छी हाइट से व्यू करना, एक्सप्लोर करना. एंड टोक्यो में देयर आर सो मेनी tallest buildings and towers, but if I'm not wrong, Skytree is the highest among all of them. So जो हमारा मकसद है वो Skytree से ही हल होगा. गाइस स्काई ट्री के नीचे
का एरिया है जहाँ रेस्टोरेंट्स हैं एंड वेरी ब्यूटीफुल हैपनिंग प्लेस. Believe me, it's such a pleasant weather. इतना मज़ा, इतना सुकून. I can't explain you. Let's move towards the Skytree Tower entrance. Basically, there are two types of tickets available. एक 2000 something feet तक है, 3000 something feet तक है. तो भाई प्राइस का डिफरेंस तो है और होता रहे. अब इतना दूर आया तो भाई तो मज़ा जो है वो तो फुल लेना है. इसी ही लिफ्ट में एक हम ऊपर आए थे. सो लुक एट द क्यू आउटसाइड. इट्स सो क्राउडेड. वो देखिए कहाँ तक क्यू गई हुई है. देयर आर सो मेनी पीपल कमिंग एंड गोइंग बैक. तो देखिए जी वेट है लिफ्ट ओपन होने का. ये देखिए जी, वी आर ऑन दिस साइड. इट्स 450 मीटर एंड जो निचला फ्लोर है वो है 350 मीटर. सो वी आर एट द टॉप एंड इट्स 450 मीटर. ये देखिए जी, ये इसका एक व्यू चल रहा है एलसीडी पे. वी आर हेयर ऑन दिस टॉप. ये ब्लू लाइट नज़र आ रही है और इसकी सराउंडिंग में आप पूरा शहर देख सकते हैं जी. दिस इज़ हियर वी आर एंड इसके फ्लोर्स हैं जी 340, 345, 350 एंड 450. वी आर ऑन द टॉप जी. ガラス幅は345メートルからさらに1つ下がったフロアにございます。また1つ上がっていただくと一周できた大きな展望デッキに戻れますので、ये आप देखिएगा 350 के दरम्यान वाला जो एरिया है ये फुल ग्लास्ड है और इसके जो व्यूज़ अप्स एंड डाउन्स के बड़े では感染症防止対策のためエレベーター内での会話をお控えいただきますようご協力お願いいたしますね。ありがとうございます。 फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये टॉप पर देखें. ये है जी वो लाइट और जो आपको टावर के टॉप पे नज़र आ रही है. ये देखें जी, ये है वो लाइट. वी आर इन द लेफ्ट एंड इट्स गोइंग विद द लाइटनिंग स्पीड. और ये देखिए जी, ये हम नीचे आ रहे हैं. इट्स अ लाइव व्यू इन द लेफ्ट. इट्स अ लाइव व्यू इन द एलिवेटर. देखिए जब हम निचले डेक पर आ गए हैं जो 350 मीटर की हाइट पर है.
सो इस फ्लोर को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, इस पे क्या है। लेट्स सी जी यहाँ में क्या मिलता है। Guys, look at this Skytree Cafe here. Skytree Cafe अंदर ही बड़े मज़े का है। और I've tried fresh juice and it was amazing. देखिए और I'm going to explore that last floor. वो नहीं मिल रहा भाई, कहाँ है? Yes guys, finally I got the glass floor and very difficult भाई। Oh my god, बड़ा मुश्किल काम है भाई। Guys, ये Skytree के अंदर फूड कोर्ट है and I'm here to find some food for me. फूड नज़र आ रहा है, मेट्रो स्टेशन देखेंगे पानी वानी पीने के लिए। मोस्टली जो नज़र आ रहा है फूड भाई कुछ समझ नहीं आ रहा। थाई एंड जापानीज। लेकिन से एक फ्लोर नीचे आया तो फूड आइटम्स प्रिपेयर्ड बेक्ड एंड अदर थिंग्स आर अवेलेबल। सी बड़ा कुछ है भाई यहाँ पे भी अवेलेबल। फूड कोर्ट में तो मुझे कुछ नहीं मिला भाई, उनके मर्जी की चीज़। यहाँ पर बड़ा कुछ है पर पता नहीं क्या कुछ है। लैंग्वेज इशू है भाई बहुत ज़्यादा। डेंजरस आइटम्स हैं भाई। देखेंगे गाइस एक नाइट व्यू स्काईट्री टावर का। बड़ा प्यारा मौसम है, मौसम इज ऑसम। और दैट वाज सच अ ह्यूज मॉल इन दी स्काईट्री टावर। टावर तो काफ़ी ऊपर है लेकिन भाई इसके नीचे जो मॉल था इट वाज अ ह्यूज मॉल। चलते हैं जी, अब आज का टूर पूरा हुआ। आज का मिशन 3 चीज़ों का था। नंबर 1 टू गेट द सिम, वो अल्लाह का शुक्र है मोबाइल से मिल गई। घर जाके अब उसे इंस्टॉल करेंगे और इसे मेरे ख्याल में करना पड़ता है एक्टिवेट पासपोर्ट के थ्रू।
तो उसे जाके एक्टिवेट करेंगे। और शिबुया क्रॉसिंग मेरी हिट लिस्ट में था, वो भी हो गया। दैन द सेकंड टारगेट इन माई लिस्ट वाज स्काईट्री, वो भी हो गया। सो नाउ लेट्स गो बैक फाइंड सम अरबिक फूड। मैंने सुना है अरबिक फूड बहुत अच्छा है भाई, तो वो कहीं ट्राई करते हैं, सर्च करते हैं पहले, फिर ट्राई होगा और फिर घर चलेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर द डे, अल्लाह हाफिज़।